Hey, hello everyone, how are you all? So, one second. Okay, so today we will be starting with our topic called various forms of forms of organization. So yesterday ki class mein we have done that what do you understand by the term organization and how do you plan an organization structure. Okay, just give me 1 second so that I can start the video on my mobile so that I can see it. 1 second. Yes. Hey Mariam, how are you? Okay, so organization structure कल हमने देखा था that what do you mean by organization structure. We also discussed how to plan an organization structure and we did the importance of organization structure. Any doubts anybody? Mariam or anybody else who's actually watching this right now? Hello everybody, do you have any doubts in the importance of organizing or what is organizing or what do you mean by organization structure? Anybody? No, great. Now, moving forward with today's topic, we will be starting with various types of organization. We would be understanding the advantages and disadvantages of these and main characteristics of this. तो आज हम क्या करेंगे? सारे organization के types, उनके advantages, disadvantages, उनके features, characteristics, etc. But apart from that, one simple or important notification for Unacademy, right? Anybody who's not on Unacademy, you can come on Unacademy and you can get various benefits. First of all, you can follow my profile and one second, these are two things that I wanted to communicate to you. ये आज अपना क्लास होगा 9:30 to 10:30, 1 घंटे का स्पेशल क्लास है जहां पे हम लोग we will try to understand or we will learn the right way to prepare for NTA UGC NET examinations. अगर आप NTA UGC NET एग्जाम्स दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि यू कैन से आपका नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, this is the right approach you should follow and is this video would be helpful for every kind of people who have started their preparation or who are going to start their preparation or who have given an attempt at least. Now the next is there is an exclusive interview with KVS Madan sir, the legend of paper 1. So if you have the book of paper 1 with the KVS Madan sir, good evening Ram Kumar, good evening. So if you have ever seen KVS Madan sir, if you have ever seen KVS Madan sir or if you did not if you have never seen KVS Madan sir, you should watch this particular session. This session will help you to gain more knowledge about sir, what is his inspiration behind this book and उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपको एकदम सही गाइड कर सकते हैं आपके सक्सेस के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए, एवरीथिंग, राइट? सो 24th को होने वाला है, so like day after tomorrow, so make sure you be prepared and you come live on this session and ask all your questions and your doubts. Okay, now shall we start with today's topic? Good evening Meera, sorry Mihir, I'm really sorry. Hello Mihir. Okay, now let's start with today's topic. Let me just minimize my screen because that is not much important. Okay, shall we start with structures? Organization structures, very very easy again. Great. Yesterday हमने देखा था कि organization structure कैसा होना चाहिए, right? So we did like this two different structures, right? Now we will start with various types of structures that an organization can follow. The first type is known as line organization.
ओके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लीज आप दो चीजें याद रखिए। ये सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक है, ठीक है, और यू कैन से सबसे इजी टू फॉर्म है, राइट, एंड सबसे ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो आपको लाइन स्ट्रक्चर पता है, उसमें आएगा, बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट वन, दिस इज द सिंपलेस्ट टू क्रिएट एंड दिस इज वेरी इजी। ओके, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, हैव यू एवर, आई नो यू हैव सीन, आई एम जस्ट आस्किंग, हैव यू एवर सीन अ सोल प्रोप्राइटर और अ पर्सन जो प्रोविजनल स्टोर चलाते हैं, किराना के स्टोर चलाते हैं? यस, वहां पर आपको इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, जहां पर बेसिकली देयर इज अ ओनर, जहां पर एक ओनर होता है, एंड ओनर बेसिकली एक एम्प्लॉय को रखता है, कोई परमानेंट एम्प्लॉय, राइट, और एक और टेम्पररी एम्प्लॉय को रखता है। सो इट क्रिएट्स अ लाइन। अगर आप स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो एक लाइन क्रिएट करेगा, और सबसे ज्यादा अथॉरिटी ओनर की होगी, ओनर ना होने पर अथॉरिटी एम्प्लॉय की होगी, और एम्प्लॉय भी ना होने के बाद अथॉरिटी टेम्पररी एम्प्लॉय की होगी। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होगी, फिर एम्प्लॉय की होगी, फिर टेम्पररी एम्प्लॉय की होगी। जैसे अगर आप कोई रिटेल स्टोर वाले को देखते हैं, ठीक है, जिसका एक छोटी सी दुकान है किराना की, और वो बेसिकली कैशियर बनता है वहां पर, वो यू कैन से गल्ला जिसको हम बोलते हैं वो संभालता है, और सारा कैश कलेक्ट करना कंज्यूमर से, उनका हिसाब करना वो करता है। बाकी जो एम्प्लॉय होता है वो सारे कस्टमर को हेल्प करता है टू गेट देयर गुड्स, कि उनको कौन सा सामान चाहिए वो ला कर दे दुकान के अंदर से। और दूसरा एक टेम्पररी एम्प्लॉय जो दुकान की साफ सफाई रखता है, और कभी कभार कस्टमर्स को भी अटेंड करता है, एक्सेट्रा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम सिंपल, इजी और ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस ऑफ कोर्स यही है कि सिंपल है, इजी है और ओल्डेस्ट है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम नहीं आएगा। ये काम सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आएगा, जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है। अगर नंबर ऑफ पीपल जैसे 100 हो जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल काम नहीं आएगा। क्लियर? लाइन स्ट्रक्चर, सो सॉरी, right, so this is a simple line structure, line organization, president, vice president, plant manager, foreman, A, B and C and workers। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन स्ट्रक्चर, जो ऊपर से लेके नीचे तक फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पे चले अपन, shall we go to the next one? Okay, the next one is we have line and staff। शायद इसमें ऐड नहीं है, but I'll tell you there is one more structure after this that is usually known as line and staff। okay, अब वो structure क्या होता है, try to understand this। okay, this is an upgrade version of line structure। line structure जैसा है ना, उससे थोड़ा better structure है ये। why? I'll tell you। see, line and staff, fine। अब try to understand one thing। अगर ये प्रोविजनल स्टोर वाला, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज ही इज अ प्रोविजनल स्टोर, राइट, तो वो ओनर है, ओनर का एक एम्प्लॉय और टेम्पररी एम्प्लॉय है। अब ये ओनर क्या सोचता है कि हम एक काम करते हैं, हम अपना प्रोविजनल स्टोर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट, विल मेक आवर प्रोविजनल स्टोर अ बिग, लाइक अ शॉपिंग मॉल, ओके, और सुपर मार्केट काइंड ऑफ थिंग। तो हम इस टाइप का एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल खोल देते हैं, और हम लोग यहाँ पर काउंटर्स रखेंगे, मतलब अलग अलग शेल्फ्स बना देंगे, ओके, और यहाँ पर कंज्यूमर गोल गोल घूम सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री के लिए या वॉशरूम एरिया के लिए एक बॉक्स बना देंगे, ओके, और यहाँ पर ये एरिया में हमारा कैशियर रहेंगे, एक या दो, राइट। इस तरह हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ एक छोटी सी दुकान चलाने की आदत है, क्या वो ये पूरा फंक्शन या पूरा स्टाफ या पूरा यू कैन से स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको काफी सारी नई चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये जो बिगर स्ट्रक्चर है, उसमें पता है क्या होगा, आप कंज्यूमर को एक्सेस देते हो। एक्सेस का मतलब, अब बेसिकली जब आप किराने की दुकान पे जाते हो तो आप दुकान के अंदर जाके सामान नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल, बट यस, आप क्या कर सकते हो, आप शॉपिंग मॉल में
दुकान के अंदर जाके हर एक प्रोडक्ट को चेक करके, उसकी प्राइस चेक करके, उसकी क्वांटिटी चेक करके, अपने हिसाब से टाइम स्पेंड करके प्रोडक्ट्स ला सकते हो। यस, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा एरिया, वो एरिया बहुत छोटा है, ये एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एरिया बड़ा है तो हमें स्टाफ भी ज्यादा चाहिए, एम्प्लॉय भी ज्यादा चाहिए, और सारे स्टाफ को समझने की जरूरत है कि भाई कौन सा स्टाफ क्या काम कर रहा है, कौन सा स्टाफ क्या काम नहीं कर रहा, कौन टाइम पास कर रहा है, एवरीथिंग। उसके बाद क्योंकि ये एरिया बड़ा है तो यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होगा, तो मुझे इंश्योरेंस भी ज्यादा चाहिए होगा, राइट। और इंश्योरेंस से ज्यादा मुझे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे, राइट। और बिलिंग स्ट्रक्चर भी मुझे कंप्यूटराइज करना पड़ेगा क्योंकि उससे टाइम बचेगा। यस, डोंट यू थिंक ऑल दीज थिंग्स आर न्यू फॉर दैट ओनर जो बहुत टाइम से किराना की दुकान चला रहा है? यस मरियम, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि अब ये सारी चीजें नहीं है जो एक ओनर को नहीं पता, सो डोंट यू थिंक उसको एक स्पेशलाइज स्टाफ हायर कर लेना चाहिए? एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जिसको सीसीटीवी का पूरा बैकअप लेना आता हो, जिसे पता चलता हो कि सीसीटीवी की फुटेज कहाँ सेव हो रही है, अगर सीसीटीवी कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको रिपेयर कर पाए। यस, ही वुड नीड एटलीस्ट वन पर्सन जिसको कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम आता हो कि कंप्यूटर में बिलिंग कैसे करते हैं और वो दूसरों को सिखा सकता हो। यस, एक को इन्वेंट्री हैंडल करना आना चाहिए कि भाई कितने स्टॉक बिक चुके हैं, कितने स्टॉक नहीं बिके, कितने ऐसे स्टॉक है जो जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सो डोंट यू थिंक उसको पूरा नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा बिकॉज ही इज टोटली न्यू टू दिस type of marketing or he is very new to this kind of organization. So usually line में मतलब exactly same ही होता है बेटा, line structure ही होता है जहां पर of course अभी भी owner main decision लेगा। ठीक है, ओनर ही मेन डिसीजन लेगा। यस, ओनर के अंडर हम एक मैनेजर को रख सकते हैं एंड वी कैन हैव स्पेशलाइज्ड स्टाफ लाइक अपना टेक्निकल स्टाफ एक हो जाएगा, राइट, अपना इन्वेंट्री स्टाफ एक हो जाएगा, अपना एचआर स्टाफ एक हो जाएगा, एक्सेट्रा, अपना सेल्स प्रमोशन का स्टाफ भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये सारे लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं जो बेसिकली ओनर को मदद करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, उसको सही तरीके से गाइड करते हैं। डन? Navneeta, oh my god, that is so sweet, cute. You can say, what do we say? Stickers. Good evening, very good evening. Any doubts in this, in any two structures, beta? Line and staff. Line is a simple one. Line and staff is in the line structure we introduce specialized staff beta. Specialized staff introduce करते हैं and याद रखना specialized staff सिर्फ suggest करता है, फाइनल डिसीजन ओनर का ही होता है। तो यहाँ पर भी अथॉरिटी ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है, अथॉरिटी सबसे ज्यादा ओनर के पास है, उसके बाद मैनेजर के पास, उसके बाद हर एक पर्टिकुलर स्टाफ के पास। डन? ग्रेट, डोना, ग्रेट। एनी डाउट्स इन लाइन एंड स्टाफ एवरीवन? Okay, now after line and staff we have the biggest structure. The biggest structure is the departmental structure or we usually known as functional. Okay, so ये हो गया अपना line, ये हो गया functional। ठीक है, अब functional क्या होता है? Functional organization is a very simple organization जहां पर टॉप अथॉरिटी में इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं बेटा या मैनेजर आता है, जनरल मैनेजर, राइट। और इनके इमीडिएटली अंडर देयर वुड बी पीपल हु आर यू कैन से डिपार्टमेंटल हेड्स और फंक्शनल हेड्स, जो भी उनके फंक्शंस होंगे उसका वो हेड होगा। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस हिसाब से क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को पहले बांट लिया जाता है और हर एक काम को, हर एक फंक्शन को एक स्पेशलाइजेशन दी जाती है, राइट, और वो उसी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं। सो दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, एचआर फंक्शन एंड मार्केटिंग फंक्शन। डन एवरीवन? यस, तो प्रोडक्शन के अंदर सारे ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो प्रोडक्शन का काम देखते होंगे, मार्केटिंग फंक्शन के अंदर सारे एम्प्लॉइज ऐसे होंगे जो फाइनेंस का काम देखते होंगे, एक्सेट्रा। गुड इवनिंग महा। Yes? Okay. Just give me 1 second. Actually, मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। Give me 1 second, everyone. Okay.
so I can put my mobile on the charge and then I can use it. Okay, great, done. Fine. One second, I'm so sorry. Okay, I'm really sorry, नेट बीच में चला गया था. Now is this okay? Sure, Maha, sure, I will. Sure. I think now it's okay. Okay. So I'll just give a quick recap. See, a line organization. Line organization is the simplest form of organization and the oldest form of organization. Easy to create. Here, authority and responsibility flows from top to bottom, and this is only useful for small organizations. This is not good for large type of organization. Whereas in the line, if we introduce specialized staff, it becomes line and staff. Line and staff organization is better than line organization. Various experts or staff are provided to help with the owner or to the manager so that efficient working can be done. This same thing is not available to line structure. The next is functional organization. In functional organization, we usually divide the entire organization on basis of its major core functions, and on those functions departments are made. All those functions are basically managed by a departmental head called production management, finance management, human resource management and marketing management. Am I clear? Prashant, why did you retract your message? I do not understand. Okay, now moving forward with this, we have two more type of organizations, that is divisional organization. Now, what do we understand by divisional organization? Please listen to me carefully. Okay, what is divisional organization? Try to understand. Divisional organization is such an organization, it is just like department, the functional organization. Okay, अगर आपको याद हो तो functional organization हम लोग functions पे function के basis पे करते थे, but divisional organization means, or departmentalization we can say, it could be divided on any terms, means on the need or objective of the company. Okay, one simple example. Suppose if you produce garments, beta, garments. Okay, how will you make division of your entire organization, or how will you divide or departmentalize each of your organization? Any idea? If you are producing garments. If you are producing garments, in which way can you departmentalize your organization? Yes. How can you divide your organization, Maha? That is my question. Suppose you are in a garment factory. Okay, you produce various types of garments. What would be the division of the organization? Yes, it is. But how can you divide it? That is what I'm asking. Think एक बार सोचो. Shall I tell? Don't you think in garments, ma'am, it is better to go for males, females and children? Why? Because in this way you could properly market those goods and you could properly produce those goods. Because see, women clothes are usually thinner, lighter and comes in bright colors, whereas male clothes are usually thicker, darker and comes in only certain range of colors. Like you can see pink color dresses, but you cannot see pink color suits or pink color shirts, right? So bold colors, or you can say bright colors, are usually avoided by males. Okay, in the same way, if I go for children, right, children dressing and all, so don't you think they have entirely different range? Correct. So suppose if my you can say factory is a garment factory, right, then don't you think
classification according to the production, finance would not be better, and by classifying it through male or female would be more better. What do you think? Ayo. Okay. Yes, we can say that can also be a possibility. Like variety of departments, yes. Ironing and tailoring, okay. Correct na? Ma, what do you think, beta? Do you agree with me? Ayyo. Yes, right na? So it is according to your objective, आपकी मर्जी. For example, one more question I'll ask. An academy. In an academy, what is the kind of division we are doing right now? Yes. One second, I'm just wait. Just write down your answers. I'll be back. One second. Ayo. So, what would be the organization of what do we say? An academy. Yes, but if you see an academy as a large, apart from NTA UGC NET, an academy is divided on base of your exams, beta. Like for UPSC, we have total alag department. We have for NET total alag different department. For banking exams, we have different department. Yes, and for NEET preparations, we have a different department. Don't you think? Don't you agree? Yes, this is department. If an academy is trying to departmentalize or divide its entire organization, this is how it is dividing UPSC, NET, bank and NEET. Why it did not go towards like subject? Suppose if we went towards the subject na beta, just सोचो अगर हम लोग ये नहीं करते and we used subjects, at that time what would happen is it would be a very confusing situation, because suppose if I teach commerce, okay, that to company accounts and business studies, economics. So this is in NET also, this is in banking also, and certain topics of UPSC also, right? So don't you think kids will get confused that this is the right course for me or not? But they have made a strategic move and chosen the correct pattern, so that only who's preparing UPSC can come to UPSC, only who's preparing from NET can come to NET. And the biggest thing is, suppose if they divided according to the subjects na beta, it would be very difficult to incorporate the subscription amount, because subscription amount फिर किस basis पे वो लोग लगाते? Yes. So departmentalization is, or division is, need and objective of the company. According to the need of the company can divide its entire organization. Like here, related to products, they are dividing. Like in the garments, we did according to the product, male garments, female garments, etc. And here if you see, it is related to cars. Okay, electric cars का पूरा अलग department है, sedan cars का अलग department है, SUV का अलग department है, and we have entire different organization or entire different department for administrative and financial decisions. Am I clear? Banerjee, I'm really not sure about this. You have to check on what do you say? An academy, I guess. You have to check it better. I'm not very sure about that. Okay. The last but not least is matrix organization. This will be doing in the next class. And please, I just wanted to say you one last thing. Tomorrow there is no class, beta. Tomorrow there is no class. The next class would be as on 29th.
Okay, so please, there is no class tomorrow, so make sure you remember that. Okay, so there is no class tomorrow. The next class would be on 29 December, and from 29 December we'll start with matrix organization, and then we'll move forward. So this course would be helpful if you are giving your paper to from commerce or management both. Okay, so any doubts, if there are there, you can ask, or else. And make sure you come to these sessions today, which I have told you. That is KVS Madan sir's exclusive interview, and learn the right way to prepare for NTA UGC NET exams, because this is very, very, very crucial and important. Thank you, Donna. Thank you so much. That is so sweet of you. Thank you, Mariam. And yes, happy Christmas to you also, Mariam. And on Christmas, we'll have an interview with KVS Madan sir as on 24th. So make sure you join. Okay, everyone. So bye, take good care of yourself, study hard, try to revise all these topics, and let's meet next week.